हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द निफ्टी सिटी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज एक हम गेम ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी। दिस विल, अगर ये स्ट्रैटेजी आप डिसिप्लिन से फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी विद डिसिप्लिन विद ऑल द रूल्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, this strategy can get you a lot of profits. And strategy की accuracy is more than 85%. Okay, number of trades are less, but the strategy's accuracy is crazy. ठीक है, ये मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर दिस स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी, यू नो एज अ ट्रेडर यू हैव टू ऑलवेज कीप लर्निंग। ओके, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस, सेमिनार्स, आई कीप डूइंग दिस. So I came across this strategy by a very famous YouTuber, Mr. Anant Ladda. उनकी strategy है ये. This is where I came across the strategy. But ये strategy को मैंने back test किया है. ये strategy को थोड़ा और refine किया है in terms of how we can trade with this strategy. Okay. Now for this particular strategy, we need two things. Okay. First is we need 200-day exponential moving average. Okay. So two indicators we need. First is your 200-day EMA, and the second indicator that we need is RSI, Relative Strength Index. Okay. 10 period ka RSI we are going to use. Okay. These two things only we're going to use. I'm going to show you how the strategy works. I'm going to show you the strategy on Nifty इंडेक्स में ये कैसे काम करेगा, एंड वी आर गोइंग टू गो थ्रू निफ्टी 50 स्टॉक्स एंड सी हाउ वेल दिस स्ट्रैटेजी कैन परफॉर्म. ओके, व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स यू कैन गेट. So what my experience says is you can definitely use this strategy for option buying. Okay, option buying is something that everyone is very interested in. You can use this strategy for option buying. Now let's quickly get into the strategy. The software, charting software that I've used, for those of you who don't know, is tradingview.com. Okay, तो tradingview.com पे जाइए, अपना आईडी बनाइए, चार्ट्स ऐसे खुलेंगे. अब हमको दो इंडिकेटर क्या लगाने हैं. सबसे पहले तो हम लगाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. सो व्हाट यू टाइप हियर इज एक्सपोनेंशियल. ओके, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा. इसकी सेटिंग्स में जाएंगे. सेटिंग्स में हमको क्या करना है, इनपुट लेंथ हमारा होगा 200. ओके, एसएमए लेंथ 20. दिस इज द settings that we have to do. Okay, now this blue line that we have here is our 200-day moving average. Now, along with this, what we need, the next indicator that we need is RSI, Relative Strength Index. Okay, तो Relative Strength Index डाल देंगे इधर. अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे. सेटिंग्स में हमको क्या करना है, RSI length we need is 10. Length that we need here is 10. Standard deviation is 2. अब स्टाइल में जाएंगे. स्टाइल में what we need basically, ये हटा देंगे लोअर बॉलिंजर बैंड, अपर बैंड 70 रहने देंगे. मिडिल बैंड हमारा होगा 40 इज व्हाट वी नीड फॉर दिस स्ट्रैटेजी. तो इसका कलर मैं कर दूंगा ब्लैक, या तो क्या करे, हाँ ब्लैक करते हैं इसको. थोड़ा लाइन को मैं थिक कर दूंगा. ओके, नाउ लोअर बैंड में हमको क्या चाहिए, लोअर बैंड में 30. इसको हम कर देंगे रेड. ओके, इसको भी थोड़ा प्रोफाउंड कर देंगे. ओके, एंड व्हाट एल्स वील डू इज वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड फिलिंग. ओके, या अब ये हमारा इंडिकेटर्स सेट हो गए हैं. So now coming down to the explanation of the strategy. Now this strategy has two basic rules. Okay, rule number one क्या है, rule number one is that your stock or index, okay, index should be above 200-day EMA. Okay, it should be above 200-day EMA. Second point क्या है, RSI should be lower, okay, lower than 30. These are two points of entry. If the index or the stock is above 200 EMA and the RSI is below 30, we will take an entry into the particular stock. Now I will show you guys with live examples. Stop loss कैसे रखना है, target कैसे decide करना है, everything we will cover in this video. Stay tuned. If you guys have not checked out our previous videos, we have a weekly income strategy video. We have a 5 EMA strategy video जिसने बहुत अच्छा perform किया हुआ है. So the reason why I'm coming out with these videos with you guys is so that you guys, my followers, if you all have not seen the strategy elsewhere, you all can learn from this. Okay, end of the day, we all want to learn, we all want to make money.
So we've got the two rules. Now what is the stop loss rule? Okay, so जो stop loss rule बहुत सिंपल है. जिस कैंडल में हम एंट्री कर रहे हैं, ओके, ये कैंडल के बाद वाले कैंडल में हम एंट्री कर रहे हैं, उस कैंडल के लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे. पॉइंट नंबर टू क्या होगा कि टारगेट कहाँ रखेंगे हम. टारगेट विल बी वेरी सिंपल. जैसे ही हमारा, अगर देर आर टू टारगेट्स दैट वी कैन हैव, 30 पे हमने एंट्री ली, जैसे ही ये 40 टच होगा, वी कैन बुक आवर प्रॉफिट और स्टार्ट ट्रेलिंग. पॉइंट नंबर टू इज वेट फॉर 7 डेज. ओके, 7 डेज के अंदर अंदर वी हैव टू टेक आवर प्रॉफिट. ओके, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एज यू नो, ऑप्शंस में डिके होता है. सो विद इन 7 डेज हमारा काम हो जाएगा. नाउ इफ यू गाइज नो एनीथिंग अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है, इफ यू गाइज नो अबाउट दिस, वेरी सिंपल, that even if we win 5 out of 10 trades, we will be massively profitable. Here I'm talking about winning 8 to 9 out of 10 trades. Okay, accuracy is this high. But you have to do this with discipline. Why discipline is important? Because ये particular strategy में number of entries that you get is less. So what I will suggest to you guys is create a separate demat account and trade in that using this strategy and see the results for yourselves. Okay, डीमैट, दूसरा डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आई विल ट्राई, अगर मुझे मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर द सेपरेट डीमैट अकाउंट. नाउ लेट्स डाइव इन. ओके, लेट्स सी निफ्टी में. तो डेली चार्ट हम यूज करेंगे. ओके, दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. दिस इज नॉट अ 5 मिनट 15 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. दिस इज अ डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. Okay, now here you can see, here we were below 30 RSI, but here we are trading below 200 day EMA. तो इधर ट्रेड नहीं बनता है. ओके, इधर एक ट्रेड आ रहा है हमारे पास, दैट इज हियर. ओके, तो इधर हमने एंट्री ली. स्टॉप लॉस का होगा हमारा ये लो के नीचे, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस हो गया. Now how do we have to take entry? Okay, now we have to wait for the first day closing. Okay, तो this particular red candle, ये red candle की closing में we know for sure कि RSI 30 के नीचे क्लोज हो चुका है. एंट्री कब लेना है? एंट्री लेना है नेक्स्ट डे के ओपन पे. ओके, तो 9:15 9:16 को हमको एंट्री लेना है. ये हमारा डे लो के नीचे थोड़ा गैप देंगे, डे लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड नाउ वी वेट. Okay, now on this day closing, we know RSI has touched 40. Okay, so what we will do here is we will not exit on the same day. Next day ke open pe we will exit. Right now, this completely depends on your mentality, how you want to trade. या तो you can be very safe and जैसे ही RSI 40 touch होता है, next day you can exit, or you can keep trailing this, or you can wait for 7 days. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so you would get your exit somewhere around here. In terms of points, if we see, if I consider the high 18,000 पे roughly entry किया, 18,265 पे exit किया. So you can get very terrific number of points, right? अब इधर 30 के नीचे गया है, but here we are trading, you can say below 200 EMA or right at the 200 EMA. This would also give you returns, but this becomes risky and we have to follow our rules. So we will not take a trade here. अब पीछे चलते हैं. Here again we are below 200 EMA. इधर एंट्री नहीं है, इधर भी एंट्री नहीं है, इधर भी एंट्री नहीं है. Okay. Now here if you see, here, okay, now this is above 200 EMA and this has gone below 30 RSI. ठीक है, तो नेक्स्ट डे ओपनिंग पे इधर एंट्री ली. जैसे ही RSI 40 टच हुआ, वी कैन एग्जिट हियर और वेट फॉर 7 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एग्जिट हियर. राइट, क्लियर है स्ट्रैटेजी? सेम थिंग, हियर वी हैड RSI below 30. Okay, here we would have entered somewhere around this candle. You would have entered, and as soon as RSI touches 40, you can start trailing. Right, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% रिटर्न देगा, बट इफ यू सी, ओके, इफ यू गो, you back test, for example, here you see RSI not below 30. I can't say it's below 30, so let's forget this. Okay, now here if you see, here RSI is below 30. Here next day we've opened above 200 EMA and we've got return.
Okay, so you can go back test this strategy for yourself, right? कहाँ कहाँ एंट्री हुई है. Here if you see below 30, here this is below 200, इधर एंट्री नहीं मिलेगी हमको. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द रूल्स. ठीक है, रूल्स के साथ स्टिक करके चलना है. 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड होना चाहिए निफ्टी, और एनी पर्टिकुलर स्टॉक एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द स्टॉक एग्जांपल्स. Okay. Now we have an example here. Now this black line that we have is 200 EMA. Same RSI chart is here. Now if you see here, you can see here RSI below 30. Here we are trading above 200 EMA. इधर हमको entry मिलेगा. Okay. Right about this candle we will get entry. And now you can see as soon as RSI touches 40 here, you would have got your exit. If you waited for 7 days, you would have got an exit somewhere around here. Okay, profitable strategy. Now if we see some other examples मिलता है, तो now you can see example here. RSI has gone below 30, you would have got an entry somewhere around here. RSI touches 40, you would have exited at the top. Okay, so या तो RSI touches 40 is the safe way to exit, but if you want more profits, if you're feeling okay price action is positive, we can continue. अगर आपको price action की समझ है, then definitely you can carry this, keep trailing this. अब recent example देख लेते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, एसबीआई. अब ये एसबीआई का बहुत रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूं मैं. ओके, नाउ लेट्स सी हियर वेरी रिसेंटली. ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक 2-3 days बैक. RSI has gone below 30. Okay, here we are trading above 200 EMA, right at the 200 EMA, and you can see entry would have been somewhere around here, and look at the returns that you've got. Okay, another recent example I can show you guys is of Coal India. Okay, yeah. Now Coal India में देखो. Okay, here just minor we dipped below 30 RSI. We are above 200 EMA, and now you've got return. Okay, so this strategy works wonders. You can test this. Now your homework will be, guys, that जाओ अपने निफ्टी 50 स्टॉक्स पे ये एक्सपेरिमेंट करना. आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं. वी नीड लिक्विडिटी. ओके, सो निफ्टी 50 स्टॉक्स में यू विल गेट लिक्विडिटी इन ऑप्शन बाइंग. सो ट्राई दिस आउट ऑन निफ्टी 50 stocks, and of course on the nifty index you can try this out. Any other instrument you want to experiment, I've told you what the strategy looks like. You can go experiment this on other instruments as well, and let me know in the comments how this strategy is performing on other instruments as well. Okay, so you will keep getting examples like this. Now for example here 30 RSI के नीचे, here 200 EMA से काफी दूर, so 200 EMA के ऊपर इधर हमारा entry trigger होता है, and then you can see the kind of up move that you have got. So personally, one pro hack that I will give you guys in this, what I do is, now I take multiple lots. Okay, now multiple lots, for you to simplify it, what I'll tell you guys, let's say that आपने इधर कोल इंडिया के 2 लॉट उठाए ऑप्शन में. ओके, इधर आपने 2 लॉट उठाए. The moment 40 RSI is reached, book 1 lot. Okay, book 50% profit, and बाकी 50% को आप ट्रेल प्रॉफिट में चलते रहने दीजिए. ओके, बाकी 50% को कॉस्ट पे लाके स्टॉप लॉस कीप ट्रेलिंग. राइट, सो दिस इज अ टेरिफिक स्ट्रैटेजी. यूज दिस स्ट्रैटेजी फॉर लेवलिंग अप योर गेम. नाउ ये स्ट्रैटेजी का एक ही खराब खराब तो नहीं कह सकते, बट एक ही वीक पॉइंट है कि इसमें ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे. ओके, यू विल हैव टू लिटरली गो एंड फाइंड ट्रेड्स. इस पे आप स्क्रीनर भी यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट स्क्रीनर का एग्जाम लिंक, आई विल ट्राई एंड गिव यू, आई एम प्रॉमिसिंग. You can use screeners as well in this, so directly you don't have to sit and manually search each stock. बहुत ही basic rules है इसमें, which we can apply through a screener. Right, if you like the video, guys, please hit the like button. I'm sure you like the video. Please hit the like button. Please comment what you feel about this strategy, and we will be in touch for more such informative videos.